I'm possibly the only one here without a speech, but I have you to read 300 pages which we have written. So I don't think I need to do the speech because I've had the great occasion to interview a man who I can only call his life a potboiler, and you will discover when you read the book that it's no ordinary life, as Aakash aptly put, one life in many lives. So as we wait to unveil the book, I'd like to tell you how the whole story unfurled. Aakash is Sri Chaudhry's most trusted general, though he prefers to call himself the foot soldier in his father's army, an educationist. He is responsible for taking Aakash on an unstoppable multiplication route. Hands together, guys. These are incredible stories unfolding here that we all want to know. The stage is open to you, Mr. Aakash. I definitely don't like these fillers. But then thank you for the honor. Thank you everyone for being here. It's been an incredible work of art that we were so proud that Anshu could put it out in the words. As you go through this book, you will realize that it is not just a story about a man. I think to me, it's the India story, quintessential. How this country with bare-bone means can give birth to fantastic entrepreneurs who can actually make world-class brands, world-class products. This is a story about that. And as you go through the pages, you'll also find a bit of wit there. Very, very interesting anecdotes. Some of the moments that we experienced while talking about the book was also, did bring in some tears in our eyes, because we would, recollect all those thoughts, all those years when we as a family were a very, very humble family, and, the definitions of happiness were very, very different, and how this journey has treaded. And when we look back, it's as Anshu mentioned, that I keep saying that, he's lived many lives in one life. And when I say that, I'm sure you're eager to read the book, but please don't overlook the foreword, because I've written that. That's the only piece I've written. And after writing that, Anshu says that I can really spot an author in that. So thank you, Anshu. I mean, so coming from you is a big appreciation. So I look forward you all enjoying this book, this masterpiece written by Anshu. Thank you. Ladies and gentlemen, we have in our midst Honorable Minister of State for External Affairs and Culture, Srimati Meenakshi Lekhi. Please welcome her on stage. If you cannot see this, I would request you to please stand up, because you cannot miss this. This is one of the most incredible journeys you could read of. We like everyone to give a big round of applause. Mr. J C Chaudhry. My heartfelt thanks and gratitude to Srimati Meenakshi Lekhi, Minister of State for External Affairs and Culture, for gracing this evening at his presence. Once in a while, you come across a life that's so inspirational that you can only think about it and with awe. Shri J C Chaudhry is one such life. Today, everyone associated with the education sector in India, particularly the competitive examination sector, will recognize Aakash as a game changer.
It's a fascinating story of entrepreneurial success. But even more fascinating is the story of the man behind Aakash. From humble beginnings as a school teacher to creating a multi-billion franchise, it's a story of a great grit and perseverance and incredible vision. I'm glad that Shri J C Chaudhry has chosen us to tell his story. It's a privilege to be talking this story to readers all over. I'm thankful to my friend Aakash, who first broached the subject of doing his father's biography. It has been a learning experience. It is as much a business biography as it is a motivational, inspirational tale that all aspiring entrepreneurs can draw upon. I would like to thank the whole team at AESL in facilitating this book. I would like to thank my friend Tiska Chopra and Maria Goretti for their presence tonight in making this event a grand success. Thank you, ladies and gentlemen. Thank you. So now I'm going to call the man himself on stage, J C Chaudhry. He's an educationist, an entrepreneur, a numerologist, a spiritual human, a philanthropist. Yet, if you call him teacher, you will get full marks from him. Respected Chief Guest, मीनाक्षी लेखी जी और सभी उपस्थित मेरे मित्रगण, रिलेटिव्स, सबसे पहले मैं सबका धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने यहाँ आकर मेरी हौसला अफजाई की, अपना समय निकाला और इस पूरी जर्नी के अंदर आप लोगों का जो साथ रहा है, जो सहयोग रहा है, वो मैं कभी भी नहीं भूल सकता। आज मैं इस स्टेज पे खड़ा हूँ तो इसकी वजह आप लोग हैं। मेरा हार्ड वर्क कम है, आप लोगों की दुआएं, आप लोगों की हेल्प टाइम टू टाइम जो मिलती रही है। आई एम ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू फॉर दिस थिंग आल्सो। इस स्टेज पर पहुंचने पर जैसा कि आप जानते हैं, जैसे जैसे एक सीड सो करते हैं और ग्रो करना शुरू करता है तो धीरे धीरे उसकी मॉर्फोलॉजी चेंज होती चली जाती है, उसके फिजियोलॉजिकल फंक्शन एनहांस होते चले जाते हैं। तो जब हम बच्चे होते हैं हमारी सोच कुछ और होती है, डिज़ायर कुछ और होती है, और उम्र बढ़ती है कुछ और डिज़ायर चेंज होती है, सोच बदलती है। तो मैं देख रहा हूँ कि ये एवोल्यूशन जो है लाइफ के अंदर चलता जाता है। आज अगर इस स्टेज के ऊपर जो हम लेक्चर दे रहे हैं, अगर कोई 25 साल की उम्र मुझे कहता तुम ये करो तो मैं सोचता क्या बात कर रहा है, उस टाइम ये बात समझ में नहीं आती। तो एज का, हर उम्र का अपना अपना सोच होता है और डेफिनेटली मैंने ये देखा है, कंक्लूड किया है कि इनमें कि देयर इज़, ये मेरा डॉक्टर है, हर वक्त मुझे दवाई याद दिलाता है, अलार्म बज जाता है, अदरवाइज भूल जाता हूँ क्योंकि मेडिसिन बहुत खानी पड़ती है। तो इसमें मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि ओवर द, जैसे कहते हैं कि इस पूरे सफ़र को अगर हम 3-4 बातों में समराइज़ कर दें तो जो मैंने ऑब्ज़र्व किया, महसूस किया है कि लाइफ के अंदर जो कुछ हम लिखवा के आते हैं होना वही है, जो मर्ज़ी कर लो वही होना है। वैसे ही हालात ईश्वर बनाता है, वैसा ही डीएनए काम करवा लेता है। हर चीज़ पहले ही डीएनए के अंदर कोडेड है, हम यहाँ सिर्फ डिकोड करने के लिए पैदा हुए हैं और काम करते चले जा रहे हैं। हार्ड वर्क बहुत ज़रूरी है और हार्ड वर्क भी भगवान तभी कराता है जब वो कोड में लिखा होगा। अगर वो लिखा नहीं है तो हार्ड वर्क भी नहीं कराएगा। तो इसलिए डेस्टिनी एक अपनी जगह पर है और कुछ कुछ ऊपर लाइफ में मैंने देखा है कि डेस्टिनी को मैंने बदलते हुए देखा है, हाथ की रेखाओं को बदलते हुए देखा है, जो कर्मा के द्वारा और सही इंटेंशंस के द्वारा, सही इंटेंट ही लाइफ का मूल मंत्र है।
कई बार हम सोचते हैं हम अगर मेरा काम ईश्वर कर दे तो मैं गोल्ड का ये बनवा दूंगा, मैं इतना पैसे चढ़ा दूंगा। कभी भगवान को किसी चीज़ की लालच देते हैं। तो मैं एक बार सोच रहा था कि हम भगवान को क्या दे सकते हैं। हम तो केवल भिखारी हैं, मांगते ही रहते हैं, और भगवान को हम दे क्या सकते हैं? दे तो सब कुछ हो ही रहा है। फिर भी मेरे दिमाग में आता है हम एक चीज़ है जो भगवान को दे सकते हैं, धन्यवाद कि तुमने हमें इतना अच्छा शरीर दिया, स्वस्थ शरीर दिया, इतना सुंदर शरीर दिया, और बिना पैसे के दिया, फ्री में दिया। मज़े की बात। तो उसका धन्यवाद करना बनता है। और जो लोग धन्यवाद करते रहते हैं, पल पल उसको याद करते रहते हैं, उनकी लाइफ में कोई संकट नहीं आता, आता भी है तो चल जाता है। तो इसलिए ये मैंने सीखा है इस पूरे सफ़र के अंदर कि जब आप ईश्वर का स्मरण हर समय दिमाग में रखते हो और अपनी सारी अचीवमेंट्स को उसी को देते हो, अपने आप कुछ नहीं रखते हो, तो यू आर ऑलवेज बेटर ऑफ। और जिस टाइम हम ये कहते हैं कि मैंने कुछ किया है, ये मैं शब्द सबसे वर्स्ट शब्द है लाइफ के अंदर। मैं की तो पावर ही नहीं है। एक बुलबुला किसी पाइप के अंदर फंस जाए, पेट में फंस जाए, वही हमारी लाइफ हेल्प कर देता है। तो इतनी शक्ति इंसान की है ही नहीं कि वो कुछ कर सके। बाकी कहने के लिए कुछ भी कहते रहो, ज़रा से भी हमारे अंदर बर्दाश्त नहीं होती। ज़रा सा पेन होता उसी में करहा पड़ते हैं। तो हम वैसे सोचते हैं कि हम बहुत बड़े हैं, सब कुछ कर सकते हैं। ये सोचने की बात है, करने वाला सब कुछ वही है। ये कहानी ऐसी बनी है कि मैंने ये भी देखा है कि ईश्वर जो भी करता है सही करता है, और वो कभी गलत कर ही नहीं सकता। ये दिमाग में रख लीजिए। अगर आपको तकलीफ़ें दे रहा है, जितनी ज़्यादा दे रहा है, तो ये समझा मैंने लाइफ में मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करता है। अगर मुझे इतनी तकलीफ़ें दे रहा है तो मुझे इसका मतलब पक्का कर रहा है, मुझे किसी अगले सफ़र की तैयारी के लिए तैयार कर रहा है। वो बड़ा कलाकार है। और इसलिए मैं हमेशा ही सोचता रहा कि मैं कई बार कोई तकलीफ़ नहीं होती थी, दुख नहीं होता था, मैं कहता था क्या हो गया, मेरे कोई गलती तो नहीं हो गई। अब मुझे कोई ट्रेनिंग नहीं दे रहा भगवान, कुछ ना कुछ तो करो जिससे मेरा काम चलता रहे। तो हमेशा ही ये जान लीजिए कि जब कभी आपको भगवान तकलीफ़ देता है, पहली बात उसका धन्यवाद करो कि उसने आपको इस लायक समझा कि आप वो तकलीफ़ बर्दाश्त कर सकते। इट मीन्स यू आर कैपेबल। अब आपको वो और कैपेबल बनाना चाहता है। इसकी कहानी सोचने वाली है, ये हमारी समझ में नहीं आती। लेकिन अगर हम समझ लें इस बात को कि जो हमारा पैदा करने वाला है, हमारा पिता है, हमारा बुरा कैसे कर सकता है? कभी कर ही नहीं सकता। वो जो कर रहा है अच्छे के लिए कर रहा है। यही अगर सोचते रहें तो तकलीफ़ें लाइफ के अंदर बहुत कम होती है। अदरवाइज़ हमेशा ही लाइफ आदमी रोता रहेगा, भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया। मैं कहता हूँ यार मेरे साथ ही कर तू, क्योंकि मुझे आगे बढ़ना है। तो हमारी लाइफ स्टोरी में भी ऐसा रहा है कि जब जब कोई चीज़ डिफ़िकल्टी में होती है, जब हम हार्डशिप के अंदर होते हैं, जब हमारे पास रिसोर्सेज बड़े लिमिटेड होते हैं, तब हमारे जो अंदर जो शक्ति है उसको पूरा निकलने का बाहर मौका मिलता है, कुछ काम करने का मौका मिलता है। आप देखते हैं कि छोटे बच्चे जो झुग्गी में रहते हैं और जो बच्चे कम पैसे वालों के होते हैं, वो नंगे सारा दिन सर्दियों में घूमते रहते हैं। ना उनको ज़ुकाम होता है, ना उनको बुखार आता है, ना कुछ आता है। और जो पैसे वालों के बच्चे होते हैं, ज़रा भी रज़ाई मुंह से उतरी नहीं, छींकें शुरू हो गई, डॉक्टर को फ़ोन लगा दिया। तो उसमें इम्यूनिटी नहीं है, रेजिस्टेंस नहीं है। वाइल्ड ब्रीड बनने के लिए हमें हमेशा ही फाइट नेचर के साथ, उनके साथ करना चाहिए। तो आई हैव बीन ब्रॉट अप इन माई लाइफ थ्रू दोज पीरियड्स when there was no chappal till 7th class on my foot, always going barefooted on the hot conditions, putting in the dung whenever to just cool my foot, and all type of things which I felt I did it. मेरे दिमाग में अचानक आया कि इससे पहले कि मैं यहाँ से रुखसत करूँ, अपनी कहानी एक बार लिख देता हूँ। ये ओम इंटरनेशनल पब्लिकेशन का बड़ा शुक्रिया है कि उन्होंने मेरे को इस लायक समझा कि मेरी कहानी लिखी जा सकती है। और उन्होंने बहुत अच्छी राइटर मिस्टर खन्ना को भेजा, जिनकी अंग्रेज़ी के मैं हर बार पढ़ते समय डिक्शनरी खोलनी पड़ती है, बहुत मुश्किल वर्ड हैं, क्योंकि हम गवर्नमेंट स्कूल के हिंदी मीडियम के पढ़े हुए, हमारा तो सारा काम इधर मार से चलता है। तो इतने इनक्रेडिबल ये शब्द जो पहली बार ही सुना जब ये किताब बनी, तो बड़े अजीब। मैंने आकाश कहा, मैंने कहा यार इनक्रेडिबल क्यों लिखा, मेरे समझने का मतलब क्या है इसका।
तो कहने लगे, फिर उन्होंने बताया कि ये मतलब है। तो कहने का मतलब ये है कि जितना मज़ा सिंपलिसिटी में है, सीधे साधे रास्ते में है, उतना मज़ा टेढ़े शब्दों में नहीं है। शब्द वो जो दिमाग के अंदर जाए, दिल के अंदर जाए, सोचना ना पड़े। तो मैं चाहूँगा कि आगे से कोई कहानी लिखें तो शब्दों को थोड़ा सा हमारे जैसे लोगों को ध्यान में रख के लिखा जाए। तो आज बहुत ही शुभ दिन है। मैडम मीनाक्षी लेखी ने टाइम निकाला, आप लोगों ने भी टाइम निकाला। आई एम ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। दिस स्टोरी will definitely inspire the people who are in the villages, who are deprived of any facility in their life, who wish that they should become something great in their life. So this will be definitely working as a role model for them. और मैं चाहता हूँ कि अगर 1000 किताबें बेचने के बाद, पढ़ने के बाद, अगर 10 लोगों की ज़िंदगी भी सुधर गई और उन्होंने लाइफ में कुछ कर दिया, तो इस किताब को लिखने का पर्पस, छापने का पर्पस अचीव हो जाएगा डेफिनेटली जो है। Thank you very much. Thanks a lot. I would now like to welcome on stage Srimati Meenakshi Lekhi, our chief guest, Honorable Minister of State for External Affairs and Culture. Srimati Meenakshi Lekhi is a seasoned leader, a legendary lawyer in the Supreme Court, and also a columnist. Thank you very much. मैं जब चौधरी जी को सुन रही थी तो मेरे दिमाग में एक लाइन कौंध रही थी, और वो लाइन थी कि उस आदमी को क्या गिराएंगे जिसे ठोकरों ने चलना सिखाया हो। तो जिस व्यक्ति ने इतनी मेहनत की हो, मेहनत की पराकाष्ठा, जिसका जीवन एक संदेश रहे, उसको कोई क्या तोहफा क्या दे सकते हैं आप। लेकिन when I was reading about him, and I've read not the book but the abridged version of Mr. Chaudhry's life, definitely this is a life which is depicting aspirational India, which is telling the story of India, which is sending a message that this is what India and Indians stand for. People who can work hard. People so-called came from nowhere. Nowhere does not mean they came from nowhere. Nowhere means they were brought up by very principled and value-based parenting is what they got. And had they not got the value-based parenting, they would not have reached where they have reached. The fact his parents would have told him and have given him the confidence to face up to the world and work hard, be on the right path, do not find shortcuts, is the message which his life is giving. And that message becomes so important for many of us who see lives being lived all around us. I am sure I know of people who tried to find shortcuts in life. I know people who change with time, but definitely not Mr. J C Chaudhry. So starting with a group of 10, 12 students, starting a class, a coaching class for medical entrance examination. All those who have had children would know how difficult it is to get them admitted into these colleges, how difficult it is to take these exams, how much effort that goes into preparing and working for it, because the competition is so tough and so many people for single seat. And preparing them for that kind of exam with 10, 12 students and getting 7 of them in single go into the colleges, obviously the message will go louder and louder, and that echo would bring more business. And then you start multiple centers, and multiple centers also mean that much more work. Multiple centers also mean that much more effort. And someone who started his life from humble background, और बहुत तरीके से इन्होंने कहा कि मैं सरकारी स्कूल का पढ़ा हूँ, तो मेरे को लगा कि मैं थोड़ा सा इस पे टिप्पणी कर दूँ कि मेरे माँ बाप और मेरे सास ससुर सरकारी स्कूल में पढ़े थे,
क्योंकि उस ज़माने में सरकारी स्कूल की पढ़ाई बेहतर होती थी, तो वहाँ एडमिशन लेना मुश्किल होता था। तो अभी मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहती, स्टेट सब्जेक्ट है, राज्यों की जिम्मेवारी है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई अच्छी करवाएं, और माँ बाप का भी फ़र्ज़ है कि सरकारी स्कूल में बच्चों को भेजें जहाँ पढ़ाई अच्छी होती है, क्योंकि बहुत सारी ज़िंदगी तो तगमों पे निकल गई, नॉट ऑन द रियल स्टडीज़ बट द लाइफ्स kind of moved around many ways. And I just pray that the education system with new education policy changes and gives opportunities to students to have a flexi system. Some people, because of the hardships that they face in life, may take a year or 2 years or some years off and may want to rejoin the system of education. The education system should be more oriented towards the practical aspects and things. That's a conversation for another day. But my hopes increase and my prayers go for Mr. Chaudhry and of course to Aashish and Aakash. But I want to cite one line from the book, and that is in chapter 8. And I thought I'll do the needful and I'll read this. So this is a quotation from Warren Buffett, aptly puts it, someone sitting in the shade must not forget that someone planted the tree long ago. So someone worked very hard to establish a company worth 1,200 crores. And that's a lesson for the boys and the generations to come, that one lifetime created this asset. And whatever we are enjoying or everybody else is enjoying is possible because someone really gave his life for the well-being of society, added service and quality to the education and well-being of many, many people. As Mr. Papreja just now mentioned, that close to 4.5 lakh students who became doctors and 1.5 lakh people who became engineers and got engineering qualification from IITs and things. It's a huge contribution that you've made that happen. You put the skill of working hard in those students and you added value to everybody else's life around you, and of course added value to the company. And people who understand business, this aspirational India and this lesson is a lesson which needs to travel far and wide. And I completely agree with Mr. Papreja just now that the book be translated into Hindi. I'll say why Hindi in all the regional languages. सब लोगों को पता चलना चाहिए कि भाई अगर आप एक बार तय कर लें कुछ भी पाने का या मेहनत करने का, और मेहनत की पराकाष्ठा तक उतरने में आपको कोई तकलीफ़ ना हो, और सीधे साधारण रास्ते भी आपके लिए उम्मीद ही नहीं बल्कि कामयाबी का कारण बन सकते हैं. आपको किसी का बेटा बेटी होने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी स्पेसिफिक स्कूल कॉलेज में जाने की ज़रूरत नहीं है. आपने ज़िंदगी कहाँ से शुरू की वो ज़रूरी नहीं है, आपने ज़िंदगी कहाँ ख़त्म की वो ज़रूरी है, और किस रास्ते पर चले वो उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है. तो आपका रास्ता भी ठीक था, आपकी मंजिल भी ठीक थी, और आपने बहुत लोगों की ज़िंदगी में मदद की. तो ईश्वर आपको अच्छा स्वास्थ्य दे और आपके जीवन में सुख शांति रहे, और आपके जीवन को प्रेरणा समझकर अधिक से अधिक लोग उस रास्ते को अपनाने का प्रयास करें. इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद. और ये किताब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे इसकी मैं उम्मीद करना चाहती हूँ. थैंक यू. What follows now is a dramatic reading by these two beautiful women, Tiska and Maria. But before that, I'd like to invite all of you to see a little glimpse of his life in a small movie. Thank you. दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल. आज का ये दिन बहुत ख़ास है. माँ बाप ने प्यार से इसका नाम जगदीश रखा. उन्हें क्या पता था कि जगदीश पूरे जग को
दिशा दिखाने वाला है। Good evening, everyone. It is really an honor and a privilege to be here and to listen to your success story. I have always believed कि अगर इंसान ने ठान लिया कि कुछ करना है तो उसके अपने अलावा उसको कोई और नहीं रोक सकता. I've always believed that, and you are living proof of that. Thank you for inspiring all of us here. And let me start by reading a small excerpt from the book, a very nice chapter called New Chappals. And this is right up to class 6. Jagdish did not own any footwear. Young Jagdish made shoes out of cow dung, which he found at a cow shelter on the way to school. He would rush to the shelter, find fresh dung, step on it, and wait for it to dry before coating his tender skin with it. With those stinky boots on, he would reach the village well by the school, fill a pitcher of water, and wash his shoes away. And each evening, he would beg his father, who he called Lalaji, to buy him a pair of chappals. After months of pleading, his father grudgingly bought him a pair. With the slippers on, he felt like he was on cloud 9, cruising the sky in his footwear as if it were a grand aircraft. Bravado was Jagdish's middle name from childhood, and a lack of fear his signature move. Once he was pushed into the village pond by a friend who knew he could not swim to save his life. A chorus of voices told him to flap his way to safety. He flapped away, and on discovering that he had reached the other shore, he learnt to swim intuitively and jumped right back in and headed to the opposite bank. I wanted to make sure that I had learned how to swim, he says. He repeated this feat all afternoon, taking bets to see who could swim across the pond faster. That's such a lovely story. So I have another piece from the book. This is called The Great Train Robbery. In 1966, Jagdish completed his matriculation in Hatin. Before joining college, he wanted to consult a doctor in Delhi about his left ear, in which he felt he was short of hearing. Nanak Chand handed Jagdish an allowance of rupees 10 and packed him off to his brother's house. This sum included the ticket fare plus a princely daily expense account of 1 rupee. Jagdish was thrilled at the thought of traveling alone in the train, going to Delhi and being with Prabhu Dayal, whom he admired a great deal. This would be his first taste of the big city. Excited at the prospect, he boarded the train to Okhla railway station. A cousin who lived in Zamrudpur, that's Kailash Colony, had volunteered to pick him up when he landed in Delhi. He settled down in a reserved compartment, the 10 rupees parked in his pocket, and a happy smile plastered on his face. Suddenly, a slick-looking vendor with a shrill voice caught his attention. The man was trying to sell a watch, perfume, comb, talcum powder, and other such products. The sparkling watch caught Jagdish's fancy. He had never worn or possessed one before. He was very excited when a co-passenger bid rupees 1. Someone else instantly raised the bid to rupees 3, then 4, finally 7. Competing with the bidder from the other end of the compartment, Jagdish took it to a whopping rupees 8. The watch was his, and the vendor happily handed over his bag of products to the delighted young boy. Someone joked that he must be getting married to need all these toiletries and objects of desire. Jagdish was oblivious to jibes, thrilled that he had bought the watch for a steal, even if that had left him with only 2 rupees to spend in Delhi. On reaching his cousin's home, he impatiently tore open the packet and wore the watch on his wrist. Half an hour later, he realized that the hands were stuck and the dial static. Despairing, he turned to a friend who took him to a watch repair shop. The technician opened up the watch, and lo and behold, inside its body resided a magnet and a few strips of paper. It was a mere toy. The perfume he had bought on inspection turned out to be scented mobile oil
and the talcum powder was flour. Jagdish had had his first brush with orchestrated fraud by gangs known to fool hapless train travelers. I'm sure that didn't happen again ever after that, sir. There is one very interesting thing that they say, that behind the success of every man is a woman, and I believe the reverse is true as well. But please tell us the contribution of the wonderful lady sitting in that red sari, smiling at all three of her boys, and tell us about her contribution in your life. Patience, tolerance, they have been ornament of my life. A person working 12 to 13 hours daily, 7 days, continuously for 30 years without break, and still there is smile on the face. It means she understood me very well. She knew that he is out from the home. There is purpose behind that, reason behind that. और 2 बार लाइफ के अंदर ऐसे ओकेजन हुए कि मैं बहुत एक्सट्रीम थक गया, जब शरीर में कोई शक्ति नहीं होती थी, तो मैं फर्श पे बैठ के रो पड़ा। तो फिर उस टाइम इन्होंने मुझे बहुत ही तसल्ली दी, हिम्मत दी, और मैं फिर से रिजुविनेट होके फिर काम के अंदर लग गया। तो ऐसा हुआ है लाइफ में कई बार। एक आदमी, 2 तरह के आदमी होते हैं। एक होता है कि आपको मोटिवेट करता है, हेल्प करता है, लेकिन साथ साथ आपको उंगल भी देता रहता है, तंग भी करता रहता है। मैं कहता हूँ अगर तंग नहीं किया, ये सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन है। उंगल नहीं दी, ये सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन है। इसको मैं बहुत बड़ा योगदान मानता हूँ। चुप रह के जितना मुझे और क्लोज ला पाए, शायद उतना तंग करके नहीं ला पाते। तो वो पेशेंस पेड वेरी वेल, दैट डिविडेंड वाज वेरी गुड, दैट इज़ द मेजर कंट्रीब्यूशन। और शुरू में क्योंकि मैं सारा दिन स्टूडेंट्स को पढ़ाने और सिलेक्शन में लगा रहता था, तो इनका रोल उस टाइम बहुत मेजर था कि बच्चों के ग्रोन अप हो रहे थे, बच्चों की केयर करना, बच्चों को देखना टाइम पे कैसी आदतें डेवलप हो रही हैं। तो मैं सुबह का गया, रात को आता था। तो इनका कंट्रीब्यूशन इन बच्चों को ग्रोन अप करने में स्टार्टिंग के अंदर बहुत रहा है। जब ये बच्चे कॉलेज में आने लग गए तो फिर मेरा रोल चालू हो गया। फिर मैंने इनको पढ़ाना शुरू किया कॉलेज के अंदर भी, वैसे भी जो है। तो दैट हैज़ बीन देयर।